and welcome to the Indian Express. I'm Premankur Biswas and I'm here now in Ahmedabad with our Express reporters from the Indian Express print team and the Indian Express Gujarati team. We have with us on my right, we have Leena Misra, the resident editor of Indian Express, Ahmedabad. Next to her is Parimal Dabhi, the chief of bureau of Indian Express, Gujarat. To my right, to my left, I have Haresh Suthar. He's the editor of Indian Express Gujarati. And next to him is Kiran Maheta. He's the senior copy editor from Indian Express Gujarati. My first question to all of you, starting from Parimal, would be, what is the most striking thing that you have observed while covering elections from the length and breadth of Gujarat in the past few months? Parimal. The most striking thing that I have witnessed is that there is complete lack of common narrative in these elections. People are talking about various issues, but there is no common thread which is connecting the overall dialogue of the election, the issues of elections. I mean, I thought that COVID would be an important factor in the elections, but there is not any emphatic presence of COVID in these elections. I mean, BJP is talking about vaccination drive, and Congress has also announced that they will give 4 lakhs compensation to the people who have died of COVID. But as a whole, there is not much discussion about all these issues. Even inflation, there is no political dialogue going on those issues. So that is a striking thing for me. If you compare the current elections, the 2017 elections, they were mainly driven by 3 young politicians, 3 budding politicians. Hardik Patel, he was coming from the Patidar agitation. Then Alpesh Thakur, he was talking about the OBC votes. Then Jignesh Mewani, who was a young Dalit leader coming out of that Una flogging incident and the subsequent agitation that the Dalits did in the entire state. So in 2017, they were seen as the driving force of the entire election. I mean, the entire election was hovering around these 3 personalities, apart from Mr. Modi and Amit Shah and all these people. But these were the 3 main faces of the elections. And they were across the state. But this time, all these 3 leaders, they are fighting their own battles. I mean, Jignesh is fighting his own election in Vadgam. He is seeking re-election now as a Congress candidate. In 2017, he was an independent. Hardik he was in Congress, then he has changed side. He has come to BJP and he is now fighting election from his own native Viramgam. Alpesh is again, he was with Congress, then he has changed side and he's now with the BJP, and he is again seeking election from Gandhinagar South seat, which is not his home turf. So basically these 3 they are fighting their own battles rather than being the driving force of the entire political dialogue of the elections. And what are their chances, like Jignesh or Hardik? What are the advantages and disadvantages? See, as I told you, Alpesh is fighting from Gandhinagar South seat, which is not his home turf. He has been active in North Gujarat. I mean, Gandhinagar South is again North Gujarat, but he was more active in Radhanpur and Patan and Banaskantha regions. Okay, but probably there is a word that there was opposition within the party organization in that local segment. Because of that, he has been shifted to Gandhinagar South. So he may face some problem winning election from Gandhinagar South. Jignesh is probably having a tough battle at Vadgam because there are 4 parties. AIMIM, Asaduddin Owaisi's led party, they have fielded a candidate there, and Vadgam is a seat where there are lots of Muslims. It's a Muslim dominated seat. So AIMIM is there, then AAP has fielded a candidate. The AAP candidate, he is a very prominent name among Dalit activists in the Banaskantha region. So he may fetch some votes. And obviously BJP is there, and the former MLA from Congress, Manilal Waghela, who was the MLA in 2012 and 17 also,
he is right now in BJP and he is fighting against Jignesh Mewani. So he is fighting. He has total 3 opposite candidates to deal with. So for him also it's a tough fight. And Hardik is also it is for the first time that he is fighting elections. The party organization is backing him, but it remains to be seen how he fares in the election results. Okay, so basically a fractured narrative and lone battles for the young stars. Absolutely, youngsters, yeah. absolutely. Leena, what are the most striking things that you? So, according to me, in the absence of a common narrative, this time actually this third party, which is the Aam Aadmi Party, has sort of come into the narrative. So, for the first time, people are actually talking about a triangular fight, and in some places, it's a 4-way fight. So, this last happened in Gujarat probably in 1990, you know, and after that, people did launch parties. Like there was a party launched by Gordon Zadafia, there was a party launched by former Chief Minister Keshubhai Patel and Shankar Singh Waghela, but they were all born out of the BJP. This is the first time AAP has come as a brand new idea into the Gujarat electoral scenario. So, and then, you know, Kejriwal has been coming to Gujarat since May, which is after they won Punjab. So, winning Delhi was not a, big deal because it's considered a city state and not really a big footprint. But once they won Punjab, their footprint expanded and they came here with more confidence. That confidence was added, of course, with this toehold they got in Surat and some other urban municipal corporations where they won some seats. So they saw a little window where they could fight Gujarat. So this whole 2-way battle that Gujarat has been seeing since so many elections has now, actually we are seeing a 3-way battle. And that, I think, is the most interesting thing. The other thing which, we have seen reflecting in the manifestos is that how Aam Aadmi Party's guarantees, there has been a kind of stonewalling by the BJP of this freebies that the Aam Aadmi Party has promised, and not only promised, they have said that we have already done this in the states that we rule. And while they were stonewalling it, their manifestos of both Congress and BJP had a little bit of reflections of the Aam Aadmi Party guarantees. They also promised some free. The Congress manifesto, in fact, looks very much like a copy of the Aam Aadmi Party manifesto, except for the fact that they have promised what Parimal said about the COVID, compensation for people who've died of COVID, which is also interesting. They are the only party which is actually, right? They are the only party which is actually talking about COVID. And the BJP has gone on to, what it is very good at, which is tested by time, the anti-radicalization, the Hindutva, this thing, tone. So it's talking about an anti-radicalization cell. They are talking about how they will bring in the uniform civil code and so on. So according to me, I think in a way, the Aam Aadmi Party has set the narrative, where there was space in the absence of a narrative. So while 2017 saw a huge, disenchantment among the partidars, OBCs, Dalits, it was a very caste-driven, mandate. Today, we are seeing a very, people are not talking, people are not coming out with their, which way they will go. So there is the voter has become even more silent than it was earlier. So that is, I think, a very big sign we are seeing this time. Yeah. Thank you. Haresh? Yeah. आपकी सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ क्या है इस इलेक्शंस में? इस इलेक्शन में पहले तो ये था, सबको ये लग रहा था कि भाजपा और कांग्रेस की जो बैटल है इसमें आम आदमी पार्टी आ गई थी, तो सबको ये लगता था कि इस बार का वोटिंग सबसे जब ज़्यादा होगा, हाई होगा। सभी पार्टियां जो बोल रही थी कि हम सबसे ज़्यादा जीतेंगे, जैसे कि है ना, मोदी साहब ने भी कहा है, अमित शाह जी ने भी कहा था कि पिछले जो रिकॉर्ड्स है वो हम सब तोड़ देंगे। तो ऐसा लग रहा था कि वोटिंग में भी रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ है जो वोटर्स को बूथ पे लेके नहीं आई है। वो क्या चीज़ है वो तीनों पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय है,
लेकिन पिछले साल के हम जो इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर एक है ना नज़र जब डाले तो इसमें सबसे एक जो बात है मेन वो ये आ रही है कि ज़्यादा इलेक्शन वाली जो सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी को कभी फ़ायदा नहीं मिला है। यानी कि 80+ जहाँ पर भी इलेक्शन हुआ है वहाँ पर कांग्रेस जीती है। और पिछले साल की बात करूँ, पिछले लास्ट टर्म की, तो 5 सीट जो ऐसी थी कि जिसमें 80+ वोटिंग हुआ था, तो उसमें से 3 सीट थी वो कांग्रेस ले गई थी और 2 सीट बीटीपी ले गई थी। यानी कि 80 के ऊपर वाली सीट है वो बीजेपी के हाथ में कभी नहीं आई। 70 से 80 के बीच वाली हम बात करें तो उसमें भी बीजेपी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है। 70 से नीचे वाली जो सीट है वहाँ पर बीजेपी का एकदम से ये रहा है। पिछले साल के पिछले टर्म की मैं बात करूँ तो 61 सीट जो ऐसी थी कि जहाँ पर वोटिंग 70% से डाउन था, तो ये 61 सीट में से 37 सीट्स बीजेपी को मिली थी, यानी कि 61% जैसी। और कांग्रेस को वहाँ पर ज़्यादा सीट नहीं मिली थी। तो इसका रीज़न हम ये भी मानते हैं कि कांग्रेस का जो वोटर्स है वो कमिटेड है, लेकिन जब भी वोटिंग डाउन होता है, कम होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ बाहर आती है कि कांग्रेस के वोटर्स जो है वो बूथ पे नहीं पहुँच पाए। और बीजेपी इस मामले में बहुत ही एग्रेसिव है। अगर ये इलेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद भी है ना बीजेपी के जो कार्यकर हैं वो एग्रेसिव मोड में होते हैं, यानी कि 5 साल वो लोगों के बीच होते हैं, उनका जो वोटर है वो बूथ पे हमेशा जाता है। हरीश, एक चीज़ सब लोग नोटिस करे थे कि इवन वाइल ट्रैवलिंग की कांग्रेस टिक नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रचार और ये लाइक पोस्टर्स एंड स्टफ। सो आपको लग रहा है कि उनका कैंपेन थोड़ा ठंडा है या फिर कैंपेनिंग थोड़ा? इतने साल में हमने शायद ये पहली बार देखा होगा कि कांग्रेस का कोई है ना एजेंडा ही नहीं था। उनको वोटिंग को लेके कुछ ये था ही नहीं कि हमारा वोटर बूथ पे आए कि ना आए। और जो उनकी कैंपेन की रैली थी तो वहाँ पर भी उनके स्टार जो कैंपेनर होते हैं वो भी इस बार नहीं दिखे हैं। जैसे कि है ना राहुल जी की बात करें तो वो भी शायद एक बार आए हैं, बाकी के जो थे वो भी कुछ नहीं आए। यानी कि एक लगता है कि युद्ध से पहले ही है ना वहाँ पर एक ये तय था कि हमारी हार निश्चित है। ये भी एक हो है ना ये कारण हो सकता है कि उन्होंने ये जब ज़्यादा फोकस नहीं किया है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर कैंपेन किया था, गुजराती में एक है ना ये एक है ना सेंटेंस है कि भीड़ इकट्ठा होती है लेकिन वो लीड में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। हमने सूरत में भी देखा और बाकी के सेंटर्स में भी देखा है कि भीड़ होती है लेकिन वोट कम जो है ना डाले हैं, उससे ये पता चलता है कि भीड़ तो हुई थी लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो ये एक है। ठीक है जी। आपके हिसाब से सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ क्या थी आपने जो वोटिंग की, ये क्या क्या देखा? मैंने जो जहाँ पे भी मैं गया वहाँ पे जैसे कि मैं गया था खारागुड़ा अगरिया जो सॉल्ट की खेती करते हैं, वहाँ पे भी मैंने जाके वहाँ को उनको पूछा कि आपकी जो समस्या थी जो बीजेपी सरकार में अभी कितना आपको वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुझे वो वहाँ पे जानने को मिला कि उनकी 50% जो प्रॉब्लम था 50% वो सॉल्व हो गई है अभी। जैसे कि पानी, पीने का पानी, तो उनको पानी पुरवठा विभाग से अभी टैंकर भेजा जा रहा है। जो उनकी एजुकेशन की जो समस्या थी तो उनको वहाँ पे अभी बस वहाँ पे रण में जाके उनको खेती वो शिक्षण दे रही है उनके बच्चों को, और उनके लिए हॉस्टल भी एक बना दिया गया है अभी। वहाँ पे भी उनके बच्चे रह के एजुकेशन ले सकते हैं वहाँ पे। और दूसरी जो उनकी समस्या जो है वो लाइट की थी, वहाँ पे रण में जो बिजली नहीं मिलती वहाँ पे, तो उनके लिए अभी सरकार ने वो उन्होंने बोला कि अभी सोलर लगवा दिया है, तो उनका जो खेती का जो खर्च था जो डीजल का वो आधा हो गया है उनका, तो उसके हिसाब से उनको अभी वो भी समस्या उनकी सॉल्व हो गई है। अभी उनकी 2 और समस्या बहुत इम्पोर्टेंट है उन्होंने बोला, जैसे कि जो कच्छ में जो खारा पानी की कैनाल है माड़िया तक, वो उनको खारागुड़ा तक मिल जाए
तो उनकी बहुत हेल्प हो सकती है। और दूसरा वो जो खेरण का जो विस्तार है वो गुड़खर अभ्यारण्य जो बोलते हैं उनके अंदर आता है। तो उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बोर बनवाना हो, कुछ माल सामान ले जाना हो, तो वो भी बहुत दिक्कत होती है उनको। बस 2 समस्या अभी उनकी बच गई है वैसा बोला। जैसे कि हमने मोटेरा में रिपोर्टिंग किया जहाँ पे अभी सोलर भारत का फर्स्ट सोलर गांव बन गया है वो, वहाँ पे भी सब लोग सपोर्ट बीजेपी को ही करते दिखे अपनी। तो आप कह रहे हो कि लोगों में बीजेपी के लिए सपोर्ट है, पर प्रॉब्लम्स जो है उसको लेकर मतलब इतना कुछ गुस्सा नहीं है, वो कह रहे हो क्या? क्योंकि वोटर्स गुस्सा जब होती है देन दे वोट फॉर पीपल, बट व्हेन दे आर लाइक सेटिस्फाइड तब लाइक यू नो तो वो अलग एक ये बात होती है। तो जी गुस्सा या ये डिसअपॉइंटमेंट ऐसा नहीं है आपके? नहीं दिखा मुझे ज़्यादा। ऐसा नहीं दिखा आपने जहाँ ज़्यादा नहीं दिखा मुझे, मैंने जहाँ पे रिपोर्टिंग किया वहाँ पे। Leena, in our conversation, you know, like when we earlier talked about this, you mentioned like the AAP factor. Like, you know, how do you think, what role will AAP play in, you know, this? Like, some people are saying that they might eat into the Congress vote share and nothing more. But what do you feel? Like, you know. So, according to me, it's very difficult to say in whose vote share they will, get break, whose votes will be split, because AAP is largely driven by, it got its confidence from the Patels, the Patidar vote. Now the Patidars are also loyal supporters of the BJP. So we really can't say into whose votes they will actually, take away. It seems like they will take more of the Congress votes, because there is a real appetite for a good opposition here, given that BJP has been ruling for so many years and people really want a very strong opposition, and Congress has not fulfilled that role. And also, so while we cannot really say that kiska vote they will take, we can assume that more votes of the Congress will be taken by Aam Aadmi Party, which if you go by pure math, then there is which way that will swing, we do not know. Whether it will swing into victory in terms of seats for the party is very difficult to say, So they may take a vote share, but we don't know if that will convert into a seat share as well for the Amar. Enough seat share to become an opposition, to take second place. Although the fight looks like more for second place this time, because most of the people like Kiran is saying, there is anger, but there is no anger, So, but overall, this looks like a make or break election for Aam Aadmi Party and the BJP also. BJP has to win it. Aam Aadmi Party is trying hard to, get a toehold and try to show that it can, become a third front in Gujarat. While the Congress, it's on a status quo kind of, Another thing you had mentioned earlier was the Congress may not be visible in urban centers as much, but in the rural centers, it's still and has been for over the years, still a strong presence. The voters there know their candidates, the Congress candidates and stuff. It's if you could elaborate more on that. Yeah, so Congress really has never, depended on the urban voter, because they know that they vote for the BJP. This time we went around in the tribal areas where, which is actually a Congress bastion. Most of them vote for the Congress. But there also people have started thinking about, the guarantees of Aam Aadmi Party. So in the rural areas, what happens is they look at the local leader. They look at the person who we are going to elect and what he can do for us, instead of looking at the larger picture, depending on the image of the national leader, like BJP is trying to do for Modi, and Aam Aadmi Party is trying to do with Kejriwal. So that is what might also explain probably the absence of Rahul Gandhi, as Haresh Bhai was mentioning, that last time in 2017 Rahul did almost 40 meetings in Gujarat. He went from temple to temple to temple, and we really don't know if that converted to some votes and seats for the party, or was it all to be credited to the Patidar agitation or whatever. So I think this time the
or Congress is also doing an experiment, probably it can afford to also, by not bringing in its, its big leader into the campaign. It is depending more on the, the local leaders for driving its campaign. So in the rural areas, you do find some loyalty still left for the Congress. There were villages we went to where people still talk about Indira Gandhi. They were telling us that Indira Gandhi came here and she inaugurated this plant, that kind of thing, So it was, I never thought I would hear something like that after so many years. So yeah, some loyalty is there still for that grand old party. Yeah. About Congress, I would like to add one thing. Nobody is talking about Congress, but a lot of people have told me that although they are not seen as much as BJP or AAP, the one thing that they have done very good in these elections is distribution of tickets in terms of setting proper caste equations. So a lot of people are telling me that they have done very good job in distribution of tickets. So it may give them some votes or some seats. Yes, yeah. They have done very good job. That's what lot of political experts are telling us. Also, I've covered elections in Bengal and other parts also, but is this a very high octane elections this year, like campaigning in terms of barbs and all that? Recently we have had Paresh Rawal saying something controversial, but do you feel that there has been it's compared to earlier Not elections? really, no. We have seen 2007 Maut Ka Saudagar. But this time, off late, we have seen a conscious effort by BJP to polarize the votes. Okay, on the Hindutva line. Prime Minister Modi has talked about terrorism. Amit Shah has talked about 2002 riots. So and not how so much they development, but it suddenly veered towards that. Yeah. They were So- talking about development up to a certain Yeah, time. and then suddenly this yeah. turn has come. Yeah. So apart from these two top leaders, Yogi Adityanath is there, who is talking about this Hindutva card of BJP. Assam CM Yeah, Himanta Biswa Sarma, he is also talking on similar lines, on the Hindutva line. Yeah, he spoke about the Shraddha Walkar case as a Shraddha- love jihad case. Yes. Yeah, he did. So there is a conscious effort on the part of BJP to, seek votes on the Hindutva card. That they are the one who can talk about Hindus, the majority community in the state. Yes, Haresh. इसमें ये है कि बीजेपी स्टार्टिंग तो है ना डेवलपमेंट से करती है, लेकिन जब भी इलेक्शन एंड की तरफ जब जाता है तो हिंदुत्व का कार्ड ओपन हो जाता पैटर्न है यहाँ पैटर्न पे। है। वो पिछले कई साल से यही करते हैं और उनको भी पता है कि ये जो स्टेट है वहाँ पर हिंदुत्व इतना है कि हिंदुत्व को लेके कोई भी बाहर आ जाएगा ना तो पूरी लाइन खड़ी हो जाएगी, ये उनको पता है। मुझे तो 2-3-4 लीडर्स ने ये भी बात कही थी कि अगर किसी और पार्टी को भी यहाँ आना है तो उनको हिंदुत्व के साथ आना पड़ेगा। तो उसने तो ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस को यहाँ स्ट्रांग होना है तो उसको भी मंदिर की बात करनी पड़ेगी। तो ये भी आगे का एक थॉट हो सकता है कि अगर ये कुछ करना पड़ेगा। और कांग्रेस की एक बात ये थी कि कांग्रेस यहाँ जो भी वोट शेयर लाती है 35-30 के आसपास वाला, वो यहाँ के लीडर्स की मेहनत कम और कमिटेड वोट वाली जो बात है इससे आता है। तो अगर यहाँ कांग्रेस के लिए चांस तो बहुत है, लेकिन एक सही डायरेक्शन और मार्गदर्शन की जो बात है वो यहाँ पर नहीं है। अभी जो बात कही है ना लीना जी ने कि वो एकदम सही है कि कांग्रेस का जो ये है ना एक्सपेरिमेंट वाली जो बात है, इसी चक्कर हर बार कुछ ना कुछ आता है नया। अभी है ना परिमल भाई ने कहा कि इस बार जो सीट जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो एकदम सही है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। बाकी तो जब भी सीट टिकट की बात आती है, टिकट अगर पूरा लिस्ट भी बाहर लोगों के पास नहीं आया होता और वहाँ पर है ना तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाती है कि मेरा ये नहीं आया वो है। इस बार बहुत कम हुआ है, तो ये एक पहला स्टेप उनका बहुत ही अच्छा है। आगे जाके अगर ये कुछ और कर सकते हैं तो स्पेस है उनके लिए, बाकी तो हिंदुत्व यहाँ पर राम भगवान। किरण, आप कहे थे डेवरी कल्चर के बारे में कुछ बताना जी। चाहते हैं, अगर आप बता सके कि आपका डेवरी कल्चर यहाँ पे।
अभी जो मैं बात करूँ तो जो रेवड़ी कल्चर जो भी आपने जो गारंटी दी है, कांग्रेस जो भी गारंटी दे रहा है, वैसे ही ये आप जो अभी है वो तीसरा मोर्चा जो बोलते हैं, थर्ड पार्टी, जो गुजरात में अभी तक जो हम हिस्ट्री में देखें तो वो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। जैसे कि केशुभाई पटेल, उन्होंने अपनी पार्टी लेके आए थे वो, और उन्होंने भी उस टाइम बहुत सारी गारंटी बताई थी, लेकिन यहाँ के जो मतदार थे उन्होंने उनकी पार्टी को ज़्यादा वोट नहीं मिला उनको, और वो सक्सेस नहीं हुई। वैसे ही शंकर सिंह वाघेला, उन्होंने भी अपनी पार्टी लेके वो आए, और उन्होंने भी बहुत सारी गारंटी और वो सब कुछ बोला, घर देंगे, सब्सिडी देंगे, शिक्षण अच्छा फ्री कर देंगे, लेकिन गुजरात की जो मतदार है अभी, उन्होंने उनको भी मौका नहीं दिया। तो वो रेवड़ी जो बोलते हैं वो सक्सेस यहाँ पे गुजरात में अभी तक तो नहीं दिखा है, लेकिन इस बार आप जो बोल रही है तो मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन जो मैं जहाँ पे रिपोर्टिंग करने गया मैं, तो अभी बीजेपी को थोड़ा सा डर तो हुआ है आपके आने से, क्योंकि उनकी जो रैली होती है, जो उनके जो स्टार प्रचारक होते हैं, जो पहले 2017 की बात करें तो स्टार प्रचारक जब भी आते थे तो पूरी सभा भरी हुई दिखती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी कम सभा में सब कम भी दिखने लगे, हमको कुर्सियाँ खाली भी दिखने को मिली। तो कहीं ना कहीं मतदार थोड़ा सा तो वो आपकी तरफ दिख रहे हैं, और आपका जो वोट शेयर है जो थोड़ा तो पिछली 2017 की जो 17 या 18 के बैठक पे वो खड़े हुए थे, हाँ 29 पे, हाँ, तो वो अभी 182 पे अभी सब बैठक पे है, तो उनका वोट शेयर भी अभी थोड़ा बढ़ेगा ऐसा लगता है। So as you can see, viewers, the narrative here is pretty much laid out for you. A silent but experimenting Congress, the AAP factor, and BJP, which has suddenly shifted its narrative to Hindutva. These are the observations made by our reporters who have been covering these elections for the past few months. This is Premankur Biswas signing off from Ahmedabad. Thank you for joining us.